तो अब शिव जी की पैर वाली पार्ट में ब्लैक कलर देके, ब्लैक कलर की सूखने से पहले ही थोड़ा सा डार्क ब्लू देना है, और डार्क ब्लू देने के बाद थोड़ा सा लाइट ब्लू देके दोनों पैर में थोड़ा सा व्हाइट मिक्स कर देना है। एंड व्हाइट मिक्स कर देने के बाद चारों साइड से थोड़ा थोड़ा करके, एकदम जीरो ब्रश से थोड़ा थोड़ा करके ब्लैक कलर लाइन खींचना है। सेम प्रोसेस होगा दोनों पैर में। तो अब शिव जी की हैंड वाली पार्ट में डार्क ब्लू एंड थोड़ा सा व्हाइट मिक्स कर देंगे। यही सेम वाला प्रोसेस इस हैंड में भी। एंड बाद में वही वाला ब्लू लेके हैंड की चारों साइड से देके सेम प्रोसेस से व्हाइट कलर से देना है, और यही सेम प्रोसेस दोनों हैंड की एंड बॉडी में अप्लाई होगा।
अब शिव जी की हैंड की रुद्राक्ष में ब्लैक कलर देना है एंड सेम ब्लैक कलर उस हैंड की रुद्राक्ष में भी देना है। अब शिव जी की बॉडी में कलरिंग पार्ट खत्म एंड बाद में ब्लैक कलर से बैकग्राउंड में चारों साइड से देना है एंड शिव जी की बालों की साइड से थोड़ा सा व्हाइट कलर लेके मिक्सिंग कर देना है। यही सेम प्रोसेस बैकग्राउंड की एंड पैर के नीचे भी होगा।
तो शिव जी की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये वाला ड्राइंग बहुत अच्छा लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।